Yes, sir. Right. Friends, we've got Nakshatra Kanchan here. He's from Ghaziabad, and presently, while I'm speaking to him, he's sitting in IIT Patna, and he's doing a course in computer science, which is one of the most coveted. And he's very lucky. He's got IIT, and also now he's got fourth rank in NDA, the course which is going to start in January 2024. Congratulations, Nakshatra. We're very proud of you. Thank you, sir. Thank you very much. Right. From what I see here, that you had come here on 18th of June to do the training, Yes, sir. and then on 3rd of July you had your SSB, Yes, sir. right? So there was a very little gap. You just barely finished the course here, right? So that means the dream of joining the defense forces that was there with you, and in the very first go, you're one of those very lucky people who cleared SSB in one go. There are, you must be knowing that there are only about 30% people who clear SSB in the very first go. So Mhm. that's a very good thing that it shows your caliber. It shows the way you prepare yourself, right? And now, firstly, there are many institutes. Why did you pick up Cavalier when you decided to do your SSB coaching? Sir, I just when I started searching for the SSB dates came out, and I started searching for the best coachings I could opt for. One of my father's friends suggested me a Cavaliers Academy, although it was 1.5 hours away from my home. I had to up and down daily in the morning and the evening to reach here. But still, my mother said that there would be other coachings in Ghaziabad also. You can go there. It would be 10 to 15 minutes of travel, and you can easily come back. But my mother said you should always opt for the best, and she contacted the Cavaliers Academy, and I was enlisted here. Okay. So obviously, it was quite a slog coming 1.5 hours, going 1.5 hours, and then studying here. The Yes, sir. kind of homework that we expected to be done from you. So how did you cope up those 2 weeks here? Yes, sir. That during the metro, I traveled from metro. I read current affairs. Firstly, I read from the current general news, and the homework you gave that in the Cavaliers app there are many lecturate topics, and this general awareness about the army and defense forces that I used to read so that I can clear. So that I can tackle any questions in the personal interview or group Utilize your discussions. time while traveling in the metro. Yes, That sir. is very, very nice, right? That's just, the sensible way of doing things. Right. So now, when you eventually came here, now before that, obviously, you must have probably, got to see something on the YouTube and maybe know from people and all that. From what you had heard or read on the YouTube or other sources, whatever you had, how different was what we told you here in reality when you saw it? Sir, when you see such videos and such you read articles on Google, it feels so easy that this word association test, what is that? We have to make a simple sentence on that particular word. But when we come to a particular academy, when I came to Cavaliers, and I had that practical experience of solving, making those sentences in the certain time frame, that and with how which kind of sentences I should make, and how I am going to improve on that sentences. That practical experience of all the ground task and the two interviews I given in those 14 days helped me realize on where I was lacking, and how to actually tackle the situation rather than just reading and watching videos. Right. So now, especially the biggest test in psychology is your TAT. Whatever Yes, sir. notions or whatever ideas you had before joining, and when Dua sir dealt with you and gave you those guidance, what was the kind of difference you found in your own stories? Yes, sir. Basically, Dua sir particularly said on you should always do not make common people stories. Aim higher. If you are aiming to become an officer in the defense forces, you should make stories of that level. You should in the stories you should aspire that you should portray yourself that you are.
either a big businessman or an IITian or an actual NDA officer. So how you would prepare that mindset from the very first, so that it would reflect in your situation reaction tests and TATs. So did he ever tell you to mug up any stories? No, sir, never. He He never said told. that never. Right. And so when you actually saw the TAT happening there, and from the practices that you've done here, were Yes, sir. you surprised with any of the pictures, or you were pretty comfortable with them? Yes, sir. I was pretty comfortable because you can relate several occupations to a certain picture. So I have practiced writing several stories or several themes which I could instantly relate to picture that was shown. And the most easiest one was the blank picture, which he prepares very well. Okay, that is something you can prepare in advance. Yeah. So how many words are in WAT? You were able to complete all of them? No, sir. I was able to complete only 52 words in WAT. But was there at any stage where you felt little panic के 15 सेकंड में करना कभी panic हुआ? No, sir. Never. Why did you not have panic? A lot of people have into this panic. Suddenly WT में panic हो Mm. जाता है. Why did you not panic? Sir, because he said that rather leave the words which are you are not getting, rather than liking simple sentences such as honesty. Honesty is the best policy. This is a very low level sentence. But if you are able to think high enough on a particular sentence, that would reflect more than attempting all, rather than focusing on attempting 100% of the questions with 60% efficiency is not better. You should attempt 80% questions with 100% efficiency. So you had a lot of insight onto what actually is the right thing to do, and then also you don't have to be artificial in whatever you're responding to. Yes, sir. So that was it, right? So the screening is the first thing which people are really scared of, and everybody keeps telling you screening test. Hi Tauba, 70% log bahar ho jate hain. All that scare you also had with you. So Yes, when sir. you went there to SSB and when you were sitting for the first test in the Mm. PPDT, what was your feelings? How were you kind of coping up with it? There were how many? There were 150 odd people there during the screening test. Yes, sir. Almost 122 reported. 120, It and how went. many did get recommended in that in screened in? Sir, 122 reported and 44 were screened in and 4 That's were pretty high recommended. number. That's a pretty high Uh, number, right? So, what was your feeling at that time? That this is something totally awful. It is daunting. It is too overbearing. Or you had done enough practice here in Cavalier and you were pretty cool about it. Yes, sir. The PPDT is PPDT and that group discussions and all we have military planning exercises. All those require a common discussion, whether how you interact with all your group, making eye contact with all of the other fellow mates, and not just babbling about to make your presence felt. Instead, uh, putting forward some key points that would actually help the conversation to move forward or make the conversation more discreet Being a and catalyst towards making a common story, yes, sir. right? So now, what was the picture shown to you? I mean, um, Sir, I was shown a picture of a that maybe it was a factory kind of thing where four people were working. okay. So I made it on a I made it on a person. Main character was my textile engineer. ठीक है that he during the COVID times helped the common people and the poor people who were stuck in the lockdown by making his own he was a textile engineer, so he asked his fellow mates with the other three people working to help them to provide clothes to the people in the lockdown period. Okay. So when you were hearing everybody else, how many in your group? How many people were there in the PPDT? Sir, 9. Yes, sir. 9 to 10. Right. Mhm. So out of the stories that you heard from other people, also the other people, did you find the stories to be generally okay, or of some of them were rather strange? Rather straight, they were actually what I said was low level. Although you can say machinery, and it almost seemed like a tailoring shop. So almost Okay. 2 to 3 people made it a tailoring shop. I Okay. also would have made a tailoring shop, but instead, what I was taught here, so I instead of tailoring, I made him a textile engineer. That Okay. will Higher that would thinking. What higher. Duaza told you? Think a little higher. But that's Yes, sir. really.
Right. And in the narration would have been easy because your English is good and you've done, you did about 6, 7 practices PPT here? Yes, sir. At least 6, 7 practices. 6, 7 practice. So Uh, that was. So now, once you were screened in and mm, you got settled into your group, so what kind of a group did you have? I mean, like from a school, in the school, you don't have such kind of, staying out with anybody and with yes, sir. strange people. What was your experience? Like especially the first day, how was Mm. it when you actually, after Sir, screening? when I interacted with the people of my group, I find out that each there were 9 members in my group, and each of the 9 members were from different state. Myself from UP, one was from Bangalore, Punjab, Haryana, and not two, no two people were from same state. So interacting with them, and I asked them about their education and how they have prepared for SSB. So some of them have took coaching, some of them have not. So they bought books along with them of that SSB interview coaching that I don't think helped much. But they used to on the very first day they opened the book and they started reading lecture topics and how to that interview tips that have only been written and not been practiced. So I thought. So कि, while they were doing all these things, what were you doing? Sir, I enjoyed the Air Force Base. Basically, there was a table tennis on the top table Okay, so tennis I see in table the on the top. PhD from you're a table tennis player. Yes. Hmm. Yes, sir. So you On the top floor, I used to play that. There was a TV common room and also badminton and basketball courts from a certain period of time, other than the that staff members, and some was from SSB candidates. So the I also on the very first day I basically interacted with all of the 44 members that were screened in. Hi, अच्छा hello, सबसे. हाँ सबसे हो गया रिमेम्बर आई टोल्ड यू व्हेन यू वर हियर के उधर जाके एसएसबी में जीडी खेलते हैं लेक्चर लेक्चर खेलते हैं मत करना जो भी करना है हम्म, यहाँ करके जाना सो इट हाँ डजंट वहाँ पे हेल्प हाँ दैट फोर्सेस पैनिक और जो आता है वो भी फिर भूलने लगते हो भूल मतलब जाते होता हैं है सो कि दैट पीयर एनवायरनमेंट में रह के कि ओवरवेल्म कर जाता है वो. So you were comfortable with them and generally you could make friends easily ऐसा कोई इशू नहीं हाँ था so that's a good thing कई लोग छुप छुप के भी पढ़ते हैं ऐसे भी होते हैं ना हाँ सर वो थे मतलब कि मतलब छुप छुप के क्या कि मतलब सब लोग इधर उधर के घूम रहे हैं वो अपना रूम में हैं तो पढ़ रहे हैं हाँ अब उन्हें ना तो कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि सब लोग हाँ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि चलो पढ़ने दो या फिर उन्हें भी मतलब नहीं है कि यहाँ पर फ्रेंड्स बनाए या कुछ इंटरेक्ट करें. हाँ so that made a lot of difference that you made a lot of हाँ. friends here right so abhi then when you had your GD GP which for which you had done enough practices हम्म, here now specifically हम्म. GD में people were listening to you कि they were brushing you away No, sir. I personally felt very good after giving that group discussion that I have given so many powerful points that now nobody could overpower me in this group discussion. अच्छा that's good so Uh, what was the GD किस चीज की GD थी तुम्हारी Sir, my GD was about a very common topic that OTT platforms okay are very much in the culture, in the very much in the society today. So, what do you think made them the most this most common phenomenon in today's world? okay and what is the other one So the other one was that the income the Indian budget should focus on which of the affairs of the Indian society, for example, defense, yeah, space research, and both weaponization. GDs, as you see, were not requiring any specific information. I mean, if you had your head around you, if you were sensible, one could speak. तो ऐसा Yes, कोई sir. रटने की जरूरत है नहीं. If you Hmm. keep a Hmm. balanced mind, you can always handle it. Yes, sir. GP में were you able to work out on your time space वगैरह जो हमने यहाँ बताया था? Were you able to work that out easily? यस सर श्योर सर जीपी में एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम बताया गया था कि पहले आपको डिसाइड करना है आपके ग्रुप में मेंबर्स कितने कितने ग्रुप के मेंबर्स को कहाँ पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स number of people assigned to each problem and the time span given to you so that you can reach by either vehicle or by walking or whatever resources are provided to you. So that particular thing made it very easy. Group planning And time exercise and is very space जो logical. workout कितना distance कैसे timing were uh, other people to able to work out on that timing वगैरह कोई लोग कर रहे थे workout Sir, I don't know what they have written in the GP, but when but discussion में discussing, they were just this is 20 kilometer, this is 15 kilometer. अच्छा Like you should, nothing beyond that
ना. So that I means think. the practice of GPs that you did here, 4 5 6 जो भी आपने करी, Hmm. I mean they were quite similar to what you actually did there, and you Yes, didn't sir. really have a problem, Hmm. Yes, sir. right? Look Now, at the what about the scale outdoors? and. Hmm. What about the outdoors? जो तुम्हें यहाँ सिखाया था वो तरीका काम में आया? Outdoors, like individual obstacles. नहीं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो तुमने आप किए थे 2 बारी, हाँ. तो वो तो हम्म. ठीक है, बट हम्म. पीजीटी एचजीटी में जो तुम्हें तरीके बताए थे, हाँ, पीजीटी में योगासन वही हाँ हाँ हमारा वो कैंटिलीवर वाला मैकेनिज्म. हाँ 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 हाँ, हाँ, तो बेस काम में होल्डिंग आया। एंड. और जी तुम्हें सर, बताया था कि बिल्कुल. ऑब्जर्व करो, हम्म. फिर ये करो, फिर ऑल द पीछे वो हम्म. डिड इट, हम्म. आई मीन वर यू गेटिंग आइडियाज व्हेन यू देयर, और वर यू टोटली के पता नहीं कहाँ फंस गया आगे? नहीं सर, आई वाज गेटिंग आइडियाज बट पीजीटी, वो पीजीटी एंड एसजीटी वर वेरी chaotic. No one listens to anyone. They just put go themselves with a plank, put the plank, and I will cross. No अच्छा, discussion with the group, nothing else. Someone is tying rope somewhere. At least listen to what the group is saying or what would be the future response of this. What you are doing with the rope. हाउ डिड यू पर्सनली हैंडल दिस chaotic situation? Sir, at first I had some ideas, but when this chaos came in, I just backed off. It's I should not interfere more. It would invite more chaos. I just, I backed off from. I left the bully. I spoke verbally that what should you do, what should not do. जरूरी नहीं है कि आप फिर प्लैंक लेके आगे ही बढ़ते रहो, उससे कोई फायदा आफ्टर नहीं है. टाइम जो पीपल जा टेक रहे अ प्लैंक एंड दे डोंट नो हैं. व्हाट टू डू विद इट। हाँ, मैंने कहा नहीं सुन रहे हो तो फिर प्लैंक लेके जाओ, आगे जो करना है करो. मैं बस पीछे खड़े होके आइडियाज दे रहा था ठीक है, कि सो ऐसा दैट, ऐसा कर सकते हो. आप सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो उसमें मैं छीन थोड़ी लूंगा तुमसे प्लैंक. हाँ, so that is so basically if you keep your cool around you and apply हम्म. your, तो ये इधर उधर भागने दौड़ने से वो हाँ, फालतू में अपना इन्वॉल्वमेंट, फालतू का इन्वॉल्वमेंट दिखाने से कोई फायदा नहीं था. बात नहीं होता। और इंडिविजुअल हम्म. ऑब्स्टेकल सारे कर लिए थे कि रिपीट किया? नहीं, सारे भी नहीं कर पाया था रिपीट. नहीं, मेरा वो रोप क्लाइंबिंग छूट गया था बाकी, एंड मंकी क्रॉल आधा रह गया था, बाकी सारे कर लिए थे. बाकी द अदर हाँ. थिंग्स यू वर एबल टू हाँ. डू। कमांड टास्क कैसी आई थी तुम्हें, कैसा लगा कमांड टास्क में जो तुम्हें पूछी, व्हाटएवर, हाउ डिड यू? कमांड टास्क मेरी रिलेटिवली, कमांड टास्क में मेरे को बुलाया भी बहुत बार गया. जो जब अदर लोग कमांडर्स बने तो ही आस्क यू कि whom you want to invite so that they can be your subordinates. तो मेरे को ऑलमोस्ट 4 to 5 times एज अ सबॉर्डिनेट भी बुलाया गया दैट्स था. वंडरफुल, वंडरफुल, हाँ। So that what helps when you in the back screen when you make friends with your group, so they invite you to be your subordinate. They believe that he would be helpful much. And हाँ, as a commander, I got very simple. I got a simple command, and my group task officer. He When I finished the task in almost 8 to 7 minutes. Then he again okay। asked, "Ki, how would you do this in any alternate way?" Then again alternate way. So I showed him how to do a same task in 3 different ways. That जो तो आपने दिखाया दैट था कि कैसे कैसे व्हाट वी कर डू सकते विद हैं. यू हियर के बार बार चेंज करते हैं, बार बार चेंज करते हैं, जब तुम यहाँ प्रैक्टिकली हाँ. कर रहे होते हो हाँ, तो believe वो that काम में this आया। portion has become red. Believe that this is no longer there, and then how will you cross? Believe that you do not have your rope with this, then how would you cross with only plank and bully? So that's the thing we were prepared for. कि आपने तो बताया उधर था कि तुमने वो जीडीओ, सिचुएशन तो बहुत डील करी थी यहाँ पर तो। कि ये तेरी चला गया, कमांड वो टास्क चला मैंने गया. ली थी कि नहीं? डिड आई टेक योर कमांड टास्क? यस सर. तो तेरी कितनी डांट लगी थी? यस सर. लगी थी डांट खूब मेरे से कि नहीं हाँ. लगी? हाँ, यस अच्छा। सर. तो वो डांट बहुत. काम में आई लगता है। वही कि कैसे, कि ये कुछ भी हो सकता है. वो जीटीओ अपने मन से आपसे कुछ भी करवा सकता है. बट कुछ लोगों से उसने कुछ भी नहीं करवाया, बस उसने वो बैठा रहा, सिंपल टास्क उन्होंने किया, और जिससे शायद वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मुझसे 2 3 अल्टरनेट वेज भी पूछे उसने. so what would you advise somebody who's listening to this, what would you advise somebody कि भी कमांड टास्क में क्या करना चाहिए? कमांड टास्क में बेसिकली आपको ये वो बोलेगा, आपको वो देखने को बोलेगा, आपको 1 मिनट देगा वो एनालाइज करने को. उसके बाद कि ऐसा भी नहीं है कि आप खड़े हुए हो और आपने 1 पर्सन ने दोनों सबऑर्डिनेट फिनिश लाइन के उधर पहुंचा दिया, एंड ही वाज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द स्टार्टिंग लाइन. अच्छा। एंड ही सेज टू जीटीओ दैट आई बिलीव आई एम द कमांडर एंड आई हैव टू जस्ट गाइड देम, आई हैव डू नॉट टू पार्टिसिपेट. सो आपको सबसे पहले पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, सबसे एंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है. आपको इन द मिडिल रहना है, ताकि आपके आगे भी कोई हो और पीछे वाला भी आराम से फिनिश कर ले कमांड so you टास्क में. remain in और control।
हाँ, So you remain रिलेटिवली वो calm. पीजीटी और एसजीटी के टास्क से इजियर होता है कमांड टास्क। अच्छा, so ये you felt ऑब्जर्व it किया। is easier. हम्म। That's good, हम्म। very nice. Right. So now उसके बाद में तुम्हारा ये जो इंटरव्यू हुआ, you had हम्म। faced two interviews here. यस सर। And किस किसने लिया था तुम्हारा इंटरव्यू? सर एक एक के साइकिल सर ने और एक जेटली सर आ, ने, जेटली सर। है ना? हाँ. तो हम्म। बिटवीन द टू इंटरव्यूज दैट यू फेस्ड, बिकॉज यू आर अ वेरी यंग बॉय, तुमने पहले कभी इंटरव्यू किया ही नहीं होगा जिंदगी में. यस यस. सर। सो व्हेन यू यस फेस सर। द इंटरव्यूज हियर, हाँ, तो कैसा लगा था पहली इंटरव्यू में, और उसके बाद में सेकंड में गए थे तो कैसा लगा था? सो पहले इंटरव्यू में वही वही पॉइंट आया था कि उन्होंने कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो मैं नहीं कर वो मेरे को उस समय उतना जनरल अवेयरनेस नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे डेवलप किया उन्हीं 14 दिन के अंदर, कि जितना वो हो सकता है उतना पढ़ो आज। एंड अबाउट द अब मैं उस समय वो भी अबाउट इंडियन एयरफोर्स भी नहीं पढ़ के गया था। जब एसएसबी देने जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में तो पढ़ो कि 5 एयरक्राफ्ट, 5 फाइटर जेट्स, एंड व्हाट इज द कमांड चेन, व्हाट इज हाउ मेनी एयर फेसेस। मैं उतना भी नहीं पढ़ के गया था, तो मेरा उसमें पर्सनल एंड फैमिली वाला पार्ट ठीक रहा था पहले इंटरव्यू में। फिर सेकेंड इंटरव्यू जब हुआ तो मैं वो सब पूरा पढ़ के गया, अपना याद किया था कि how many bases, how functioning different branches of Indian Air Force ground duties, and where is the it is situated in Hyderabad, the academy, and मैं उसके अपने बाद। रिकॉर्ड में देख रहा हूँ, हाँ, मैं अपने रिकॉर्ड में यहाँ देख रहा हूँ, मेरे पास में तेरी दोनों इंटरव्यूज का पड़ा हुआ है. देयर वाज अ मार्क डिफरेंस बिटवीन योर फर्स्ट इंटरव्यू एंड सेकंड इंटरव्यू, लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेकंड इंटरव्यू में बहुत फर्क पड़ा था तेरे अंदर. So that made a lot difference. यस Right, सर। so that's good that at least you picked up, whatever was told to you, तूने उसको pick up करके second interview में improve किया. It is written with me here. Now when you now sat in the interview in SSB, तो यस पहले सर। तो वेटिंग रूम में कैसा लग रहा था? जब वेटिंग, कितनी देर वेट करना पड़ा था? ऑलमोस्ट 20 to 25 minutes। What did you do in that time? तुम्हें समझाया भी था क्या करना चाहिए? What did you do in that waiting time? सर वहाँ पे मतलब बहुत सारी मैगजीन्स भी रखी थी एंड वेटिंग रूम में था, सो मतलब नहीं, मतलब मैंने कुछ मैगजीन्स वगैरह पिकअप नहीं की। मैं बस आग बंद करके बैठा था आराम से कूल माइंड के साथ कि जब बुलाया जाएगा तब चले जाए। गूज बम्स तो नहीं हो रहे थे? हाँ मतलब इंटरनल नर्वसनेस तो हो ही रही थी कि मतलब रेस, हार्ट हार्ट बीट रेसिंग एंड ये सब तो वो तो मतलब आउटर मतलब फिर आने नहीं दिया मुंह पे कि जब वो उन्होंने बुलाया। So when you हम्म। entered the room, जब अंदर घुसा ही था तो क्या फील आ रही थी? सर वही कि मतलब वो पहला तो मतलब स्टैंडर्ड ही होता है, नॉक करो अंदर जाओ, वो आपको बोलेगा बैठने के लिए, उन्होंने बोला मेरे को इंटरव्यूअर ने। देन उसके बाद फिर मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब किस चीज से शुरू करेंगे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, तो बेसिकली उन्होंने नेम से ही शुरू किया और नेम के बारे में आप लोगों ने बताया था कि हु गेव यू दिस नेम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड व्हाट हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर नेम। सो वो सब क्वेश्चंस मैं उन सब के लिए तो तेरे नाम पहले भी से तो ही पक्का प्रिपेयर था। पूछा होगा, नक्षत्र इज एन ऑड नेम, पक्का पूछा होगा यस सर। नाम. यस सर। उस पे ही उन्होंने लगभग 3 to 4 मिनट्स इनिशियली पूछ लिया, देन उन्होंने बोला कि नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फॉर्मल इंटरव्यू। मतलब वो भी पार्ट था, बट इन नेम के इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने फिर अपना रैपिड फायर शुरू की। Was it very different from what you did in the two interviews here, or you found कि भाई वैसे ही चल रहा है? वैसे ही चल रहा है सर। दे आस्क हाउ इंक्विजिटिव यू आर अबाउट द थिंग्स यू डू in your educational field and also in your with your family and also in your leisure time. So how deeply involved you are with everything around you. So you're a science student, जैसे साइंस के कोई क्वेश्चन पूछे? यस सर, उन्होंने वही पूछा है, एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के बारे में अच्छा, पूछ लिया कि वो ही तो मुझे आल्सो हैड पता अ है. रिकॉर्ड दैट आई हैव क्लियर्ड दिस जेई एग्जामिनेशन विद हाँ 3000 हाँ, rank. So करेक्ट he करेक्ट. particularly asked me that they taught you this in physics, that how an aircraft flies on the principle of Archimedes principle, Bernoulli's theorem. He asked just some of the science, and also he went deep into that. अच्छा. To some extent I was able to answer, but I did not have such matlab, clarity on how the aircraft flies. And did he ask you more question on TT, or was it more on chess, both are the games that you play? Yes, sir. He asked me about chess, that what in the during when I gave went to give SSB, the World Cup of chess was going on. So he Yes. asked me that who is representing India in World Cup, and Vishwanathan Anand is playing under whom's captaincy, because that was a trick question. He asked me who's the captain of the Indian team in the World Cup. So अच्छा. most of the people would have said Vishwanathan Anand, but I knew it was Pragnananda.
So he also scared me that, are you sure that Vishwanathan Anand is praying under Pragnananda? I said yes. So चेस पे उन्होंने पूछा था, टेबल टेनिस पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। एनीथिंग अबाउट योर यंगर ब्रदर, वो 10th में है जो? यंगर ब्रदर, नो सर, पर्टिकुलरली नॉट। उन्होंने चेस में ये भी पूछा था, ओके टेल मी फाइव, वो 5 player names of chess. So coincidentally I reported all the chess players who were male. So he अच्छा then again asked me that, what about the females? I have asked you 5 names and you have listed are males. So what do you think that females are not much involved into the chess world in India? अच्छा। So I suddenly gave him 2 names that this and this are also very inspirational. But you asked only 5 names. If you asked more, I would have given you surely these names. तो जब ये लड़कियों की बात हो गई, गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड के बारे तो नहीं पूछा कुछ? नहीं सर, उतना नहीं पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। और हम्म। करंट अफेयर्स में कुछ पूछा था इसके अलावा? हाँ, करंट अफेयर्स में उस समय मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे यूएसए गए हुए थे। हम्म। वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे पे गए थे। देन उसके बाद वहाँ पे एक आर्म्स डील भी, वो मतलब एक उस वहाँ से डील भी कर रहे थे तो नासा से, तो नहीं, उसी के बारे नहीं, में पूछा के। हाँ। नहीं, नहीं पूछा। तो जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकला, कैसा फील आ रहा था? पर लग तो मतलब वही टेंशन तो था ही कि मेरे को स्टिल उस समय भी लग रहा था कि 2-3 जगह मैसअप कर दिया, बहुत मैसअप कर दिया है। क्योंकि वो आपको उस पोजीशन स्पोकन टू पे। योर अदर फ्रेंड्स, दूसरे फ्रेंड्स के साथ में बात की होगी जब मैं हम्म। बाहर आया था, तो हम्म। उनका एक्सपीरियंस क्या था, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, कैसा लग रहा था, मतलब हाउ वर दे सेइंग क्या हुआ, एंड वो लोग तो व्हाट मतलब रिलेटिवली बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू अच्छा गया है। मतलब शायद दे मैं माइट हैव नॉट रिकॉग्नाइज कि असली में इंटरव्यू जो जानना चाह रहा था उसमें उसने वो फंसा लिया होगा। और एक दो हाँ। लोग कह रहे थे कि मैं अपनी बात पे मतलब मतलब उसने अपनी बात पे मैंने झूठ बोल दिया, एंड देन ही फोकस्ड कि आपने तो ऐसा बोला है, अपनी बात पे फंस गया वो। मेरा भी एक बार मतलब ऐसा हुआ था हल्का सा। बट फिर वही कि उन्होंने मतलब ये पूछते हैं कि आपका मतलब जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो आप मैंने उन्होंने 5 फ्रेंड्स का नाम पूछा था। तो हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें से बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका, तो मैंने एक पर्टिकुलर नेम लिया। तो उन्होंने पूछा यही क्यों बेस्ट फ्रेंड है, बाकी जो 4 नाम लिए उसमें से आपका बेस्ट फ्रेंड वो क्यों नहीं बन पाया। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, मेरे को उस ओके। समय इसका कोई आंसर नहीं आया दिमाग में। कि फ्रेंड्स तो सारे ही हैं, उसमें से एक को बेस्ट फ्रेंड बोलना, तो उन्होंने पूछा तो बोलना पड़ा, लेकिन अब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है नहीं। Okay, so generally you were comfortable in whatever you हाँ। did. So हम्म। so now, like, let's say, अगर there is somebody who's asking you, let us say your own younger brother, अगर हम्म। कल को एनडीए पास करता है and he's asking you, तो हम्म। you tell him कि कुछ कोचिंग वोचिंग लेना चाहिए कि उससे, कि नहीं खुद से भी कर सकता है? नहीं सर, खुद से तो मतलब इतना सारा नहीं कर सकता। कोचिंग लेने से क्या होता है कि वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा अपर एज होता है। एनडीए हम्म। अगर आप प्रॉपरली मतलब बिल्कुल उसकी तरफ इंक्लाइंड एंड यू आर सीरियस अबाउट क्लियरिंग एनडीए, देन यू शुड ट्राई एवरीथिंग यू कैन, एंड कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड यू विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंस। And what would you advise people on the physical fitness side of it, कि खूब दंड वंड पे लो, क्या करो, what would you tell them? नहीं सर, फिजिकल एक्सरसाइज इतना टिपिकल नहीं था। बेसिक जनरल फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, आप बस ओबीस नहीं होने चाहिए फॉर द मेडिकल्स। एंड यू कैन रन रन अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर, जॉग 1 किलोमीटर, एंड यू कैन डू पुल अप्स, पुश दैट अप्स, और नोशन नथिंग जो मोर, लोगों के जस्ट हाथ 5। में है, हाँ, नोशन है जो लोगों में कि भाई पहलवानी करनी पड़ती है, वो सब नहीं है। वो सब राइट? नहीं है। हाँ। जनरली फिजिकली फिट, थोड़ा खेलते खालते हो तो काम चल हम्म। जाता है। बट दैट हम्म। डजंट मीन कि यू बिल्कुल ही मतलब मोटे हो जाओ और कुछ करो ही ना, दैट डजंट मीन दैट हाँ। आल्सो। हम्म। राइट? आर्म सो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि रोप क्लाइंबिंग, मंकी क्रॉल, और मेरे को लगा तो हर चीज में ज्यादातर वॉल क्लाइंबिंग सब में आर्म स्ट्रेंथ का ज्यादा वो रोल था रेदर देन लेग स्ट्रेंथ। हाँ, तो कितने लड़के थे तेरे, तुम इन योर ग्रुप दैट जो कर नहीं पा रहे थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स वगैरह? सर चोट तो उस बहुतों के बहुत गंदी गंदी लगी, वही रोप से जब वो टाइगर लीप होता है उसमें उनका हाँ पूरा हाँ पूरा हाथ छिला था। हाँ तो हाँ। मेरे को पता था कि मतलब कैसे करना, एम हायर देन गो हाँ। डाउन। सो वो तो सब था, तो उससे इंजरीज भी प्रिवेंट होती हैं, and बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे, देवर स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग, और इनका 3 मिनट ऐसे ही ओवर हो गया। तो मान ले अगर तुमने यहाँ पर वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ना किए होते, हम्म। तो चांस था तुम्हें भी चोट लगती वहां?
यस सर, बिल्कुल लगती। एंड वो भी डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस सीक्वेंस में चलोगे। किसको उन्होंने पहले आपको करोगे। सीक्वेंस में उन्होंने बता तो दिया कि स्किप द पॉइंट्स, बट यू हैव टू मैनेज देयर कि आपको कितने पॉइंट्स करने से कितने टाइम में कितना कर लोगे। सो मैंने रोप क्लाइंबिंग, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूरा रोप चढ़ पाऊंगा, तो मैंने वो ठीक है। छोड़ ही दिया है। स्टिल वो 10 पॉइंट का था तब भी मैंने छोड़ दिया। ये नहीं कि 10 पॉइंट का है तो आप सिर्फ रोप क्लाइंबिंग ही करो। राइट, सो इन द एंटायर एसएसबी एनीथिंग वेयर यू फेल्ट कि यार ये बड़ा मुश्किल है, कहीं ऐसा लगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, बस लाइक नहीं सर, सब इजी था। मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइजेज इजी थी मेरे लिए, सारे ग्राउंड टास्क इजी कहीं थे। पर ऐसा नहीं लगा? व्हाट नहीं। अबाउट अभी 3-4 दिन के अंदर में ये 8-10 लोगों से दोस्ती करनी है, सब कुछ करना है, वर यू कंफर्टेबल विद इट कि कैसे ही सबके साथ में घुल मिल जाऊंगा, क्या होगा, कैसा, हाउ वाज योर फीलिंग देयर? सर इनिशियली वही कि जब सब लोग एक डॉम टाइप में आए जिसमें 8-10 बेड थे, फिर लोगों ने इंटरेक्ट करना शुरू किया कि कहाँ से हो, बेसिकली यही पूछते हैं, फिर कैसे किया एनडीए के लिए प्रिपेयर। तो मैंने कहा लिया है कोचिंग। आपने भी कहा था कि अगर कोई पूछे, जीटीओ ने भी मेरे पूछा था कि आपने कोचिंग ली है, तो बी ऑनेस्ट कि हाँ ली है, प्रिपेयर होके आए हैं। सो मैंने सबको ये बोला कि कोचिंग ली है। देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट द टिप्स कि क्या क्या कराते हैं कोचिंग में, वो नहीं करके आए। सम हैव डन फ्रॉम अदर कोचिंग क्लासेस, सम हैड ब्रॉट बुक्स। फिर उसके बाद क्या, फिर मैंने कहा कि चलो क्या खेलते हो, कुछ खेल के आते हैं या बाहर घूमते हैं, क्योंकि हमारा इवनिंग में मतलब थे तो अगले दिन से शुरू होने थे साइट टेस्ट, तो उस इवनिंग फ्री थे। देन होता क्या है कि वहां पे भी सारे टेस्ट ओवर हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम अप बाय 1 PM। सो उसके बाद आप शाम को फ्री रहते हो। तो फिर हम लोगों ने भी प्लान बनाया था, मैसूर में था एसएसबी, तो वहां पे हम लोग मैसूर पहले से एक दिन घूम के एक दिन एक्वेरियम घूमने गए, तो उतने में इनफ फ्रेंडशिप हो जाती है हाँ, वो बॉयज के बॉन्डिंग बीच। हो जाती है, मगर अगर हाँ, पढ़ते रहो तो फिर बॉन्डिंग नहीं होती है। कि है ना, आप खेलो वहीं पे। कूदो, और सब हाँ, कि एसएसबी कुछ लोग थे जो मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेस स्ट्रेस थे एसएसबी के लिए, कि मेरे साइक टेस्ट अच्छे नहीं गए, अब मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। मतलब इतना ज्यादा रो रहे थे वो इस चीज के बारे में कि मैंने कहा अब तो हो गया, अब क्या कर लोगे आप साइक टेस्ट में उसको बार बार सोच के। इंस्टेड आप ग्राउंड टेस्ट टास्क पे फोकस करो, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वो कभी कभी सर में दर्द कर देता है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं हुआ, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हाँ, इतना ज्यादा ठीक है। पेसिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। Right. So, chalo, it's a very good experience that you've had, and we are very proud of you. And getting fourth rank is not an easy thing to do at all. I'm sure तुमने अपने written में भी बहुत अच्छा किया होगा. SSB also would have got very good marks. And now तो अभी थोड़ा आईआईटी में भी लोग पूछ पाछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे कि हाँ भाई एनडीए हो गया, क्योंकि बहुत लोगों का आईआईटी में भी बहुत लोगों का ड्रीम होता है फौज में जाने का। हाँ, एनडीए यहाँ पे भी है। हाँ, सो और कुछ हाँ, लड़के पूछ तो भी हैं रहे। वहां पर और जिन्होंने किया है पास? नहीं सर, मेरे बैच में तो, नहीं, पूरे बैच में कोई नहीं। बट पूछ तो रहे होंगे सब लोग। हाँ, सबको पता है एनडीए का। और यहाँ तो बेसिकली बिहार है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स का एंड यूपीएससी एंड एनडीए का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। बहुत ज्यादा सो है। यहाँ पे जो बिहार के लड़के हैं, दे आर मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है मेरी रैंक के ऊपर, मुझसे ज्यादा। पूछ रहे होंगे क्या किया, कैसे किया। हाँ। No, we are very proud of it. It was well deserved, right? And God bless you. Whichever venture you go into, जहाँ पर भी आगे जाओ, our blessings are with you. And of course, your parents have also been, very careful with your career. They've had contributed a lot towards your growth. And I recall from, what I saw you on day one. तब से अभी तक भी तेरे में बहुत फर्क लग रहा है. And it has not been too long. यस सर। Huh? That's good. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। All these exposures are making a lot of difference. तेरी आवाज में बहुत ठहराव भी आ गया पहले से ज्यादा. थैंक यू सर। So good. So keep your chin up. We are very proud of you. Keep doing well in your life, and we are always there. Whenever if you need any guidance, any help, we are always there. We are always there for you, and we'll यस। want to keep hearing all good things about you. Okay, श्योर सर। Vishnu. All हाँ। the best to you. Have a great time. God bless थैंक यू you. सर। थैंक यू सर। Okay, bye. थैंक यू। Yeah.